Good evening, guys. A very, very good evening to all of you. How are you all doing? So, welcome to the part 11 of Formula Revision Series for Chemical Reaction Engineering, especially for the people who are preparing for GATE 2025 exam. Hmm. So, in last month, we discussed 10 parts in this series where we covered the topics from Introduction to Chemical Reaction Engineering, mole balance, rate, reaction kinetics, rate equation, and non-isothermal reactors. Today, in this part, we are going to talk about the non-ideal reactors. So, this is the part 11 of the series, Formula Firestorm, Ignite Your GATE 2025 Preparations in Chemical Reaction Engineering. So, as I have already told you, today's agenda that we will talk about the non-ideal reactors. Okay, so let me know, are you guys ready? If you are ready, then we will start. Yes, okay, wonderful. So, non-ideal reactors. What is non-ideal reactor? देखो एक simple सा basic idea लेकर चलते हैं. You guys will get the proper clarity. We talked about the ideal reactors, if you remember, and in simple terms, we can say ideal reactors are those reactors in which all molecules have same residence time. Okay, any reactor in which all molecules have same residence time, that is called ideal reactor. Now, if I talk about the non-ideal reactor, in simple terms, you can say that non-ideal reactors are those in which molecules may have different residence time. Okay, what is the idea of ideal and non-ideal reactor? We have already discussed in the classes. Otherwise, we will discuss in the upcoming crash course of CRE. Okay. So for the people who want to do the CRE in fast track mode, want to understand all the important and relevant concepts along with the practice questions, so they can join the crash course. I have launched the crash course. It will start on 11th November on Unacademy platform. Okay. If you guys will need, if there will be demand, so we will also take the crash course of CRE on YouTube for the free learners. But anyways, इसे समझते हैं होता क्या है, एक बेसिक आइडिया लेते हैं, तो you will have the understanding and then it will be easy for us. So if I talk about the ideal or non-ideal reactor, so understand this with one simple example.
ideal reactors and non-ideal reactors. So suppose there are three molecules entering in the ideal reactor at A, molecules A, B, and C. Molecule A is entering at, suppose, 1 p.m. B is entering at 1:10 p.m. and C is entering at 1:15 p.m. So obviously they will get processed and leave the reactor. So if it is ideal reactor, so all molecules will have the same residence time. And suppose that residence time is 10 minutes. So A will leave at 1:10. B will supposed to leave at 1:20 and C is supposed to leave at 1:25. Simple. Okay. But if I talk about the non-ideal reactor and three molecules are entering, let's say A, B, and C. A is entering at 1 p.m. B is entering at 1:10 p.m. C is entering at 1:15 p.m. Here, the average residence time is 10 minutes, suppose, or you can say mean residence time. So all the three molecules will leave the reactor eventually. So in the case of ideal reactor, if you look, A entered at 1, left at 1:10. B after that 1:10 and left at 1:20. C entered at 1:15 and left at 1:25. So basically, the molecules which entered at first place mean are also leaving at first place. So it follows the concept first in, first out. Okay, just like a queue. In a normal queue, the people who entered first leave the queue at first place. And also you can say LILO, last in, last out. The molecules which entered at last will leave at last. This is ideal reactor. But in case of non-ideal reactor, A, suppose, is going to leave at 1:10 p.m., spending 10 minutes, but B is spending only uh, 15 minutes. So it will leave at 1:25 p.m. and C is spending only 5 minutes. So it will leave at 1:20 p.m. So here you can see the molecule which entered at first. B entered before C, but leaving after C. So it does not follow the concept of first in, first out, or last in, last out. Does not. This is non-ideal reactor. It is not necessary that here it will happen. But in ideal reactor, it will happen always. And if you try to draw a diagram, here if you see the number of molecules leaving and their residence time, if you try to draw a diagram, so all molecules will leave at the same time. Like here, you can see it is 10 minutes. But in case of non-ideal reactor, if you try to draw the diagram, you will realize that different molecules are leaving at different residence time. Okay, so here we will get some distribution curve. Okay, what is that? That we will see later on. अब यहाँ पे जो आइडिया है वो आप सबको पता है, बट एक बार मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ. आइडियल एंड नॉन आइडियल रिएक्टर का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? This is the general meaning, daily life meaning, layman terms. But technically, what is the meaning of ideal and non-ideal reactor? Ideal reactor, see, you guys know that speed, distance is equal to speed into time. Okay, so here if you look at the distance is equal to speed into time.
So look carefully. In case of ideal reactor, see what is happening. All molecules are entering at same speed. Bulk velocity is same, suppose u naught, and they are leaving at the same time. So we can say they are traveling, they are covering this entire distance in inside the reactor in same time. So obviously distance traveled by each and every molecule will be same. Speed of every molecule is same. Time spent by each and every molecule is same. So distance traveled by each and every molecule inside the reactor will also be same. Correct. But in non-ideal reactor, speed is same, let's say, bulk velocity, u naught. But the time of for molecules is different. So obviously the distance traveled by molecule will also be different inside the reactor. Okay. So now try to understand this in a different perspective, in reverse perspective. Can I say in ideal reactors, all molecules are covering the same distance with same speed? That's why their residence time is same. But in case of non-ideal reactor, all molecules cover the different distance, although they have the same speed, but their residence time is different. Why? Because they are covering the different distance. So this is the non-ideality. The flow path, the distance traveled by molecule. This is what we mean by non-ideality in actual. I hope all of you understand this. Okay. So non-ideal reactor, non-ideality means molecules follow different flow path. The other stuff you already know. ठीक है, तो हम उन सब चीजों में नहीं जा रहे, यहाँ पे आप सभी को क्लियर है। डिफरेंट फ्लो पाथ कौन कौन से हो सकते हैं, और बेसिकली यू कैन से द कॉजेज ऑफ नॉन आइडियलिटीज, you know all those things. So there are mainly three reasons. One is dead zone, that if a molecule is stuck in the eddy region or somewhere, in this case the residence time of the molecule will be almost infinite. Second reason is bypassing. Some molecules are not not participating in the process and directly leaving the system, entering and leaving. So this in this case you can understand the residence time of molecule will be short residence time. Don't say zero. जीरो कैसे होगा, टेलीपोर्ट थोड़ी कर रहा है, कुछ टाइम तो लगेगा ना इनलेट से आउटलेट तक एंटर पहुंचने में। ठीक है। थर्ड रीजन इज टर्बुलेंस. These are the three main reasons. And turbulence means if molecules are stuck in vortex formation or any other stuff. So in this case, the residence time of molecule will be quite large. Okay. So I hope you understand all this stuff. अब इस सबको स्टडी करने के लिए आपको पता है हम क्या करते हैं, वी यूज ट्रेसर, because reactant or product molecule cannot be used. They will change their identity, they will convert. So it will be difficult to trace them inside the reactor. So that's why to find out the residence time of the molecules, we use tracer. अब residence time क्यों find out करना है? To get the RTD curve. You know RTD means residence time distribution. उसके बारे में भी एक छोटा सा आइडिया दे देता हूँ मैं आप लोगों को. If you try to draw a graph between number of molecules leaving the reactor versus their residence time. So some molecules are leaving early due to bypass. So they will have a very small residence time. Some molecules will leave near the average residence time.
Some molecules will leave late due to the turbulence. And some molecules might not leave ever because of the dead zone. So here you can see in this is the what different molecules have different residence time. So we will get a distributive curve, and this distribution curve is known as RTD curve, residence time distribution curve, and the analysis of this curve is called RTD analysis. And here you can see this is the long tail. Why? Because of the dead zone. If dead zone is there, there will be a long tail. If no dead zone, then you know all molecules are supposed to touch the x-axis, means leave the system. ठीक है, तो इसी को स्टडी करने के लिए हम ट्रेसर इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो आप सबको क्लियर है क्या क्या होते हैं. ट्रेसर शुड बी व्हाट नॉन रिएक्टिव. ट्रेसर शुड बी easily available, easily detectable, okay, less expensive, should not stick to the reactor walls, should not be volatile. अब तो ऐसे लिखने वाली बात आ गई. Should be non-flammable, non-toxic, non-corrosive. तो जो भी कहानियां आपको याद आ रही हैं आप लिख सकते हो, ये सब कहानियां हो जाती हैं ट्रेसर की. ठीक है, मेनली जो 3 रीजन होते हैं वो ये होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स. इट शुड बी इजीली अवेलेबल, इट शुड बी नॉन रिएक्टिव एंड इजीली डिटेक्टेबल, दैट्स इट. ठीक है, अब इसी को स्टडी करने के लिए आपको पता है हमारे पास पल्स ट्रेसर को इंट्रोड्यूस करने के 2 मेथड्स होते हैं, which is what we call tracer input methods, or you can say tracer input experiments. ट्रेसर इनपुट मेथड्स हमारे 2 होते हैं. वन इज पल्स इनपुट मेथड. वैसे तो बहुत सारे होते हैं बट आपके सिलेबस में यही 2 मेथड है, पल्स इनपुट मेथड एंड स्टेप इनपुट मेथड. मेनली तो सिलेबस में बस पल्स इनपुट ही है, बट क्योंकि गेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है अबाउट द स्टेप इनपुट मेथड, उसके बारे में भी आपको एटलीस्ट एक बेसिक आइडिया होना चाहिए. ओके, तो पल्स इनपुट मेथड क्या होता है? यू नो पल्स इनपुट इज सडन इनपुट, इंस्टेंटेनियस इनपुट, जस्ट लाइक द इंजेक्शन वैक्सीनेशन. कोरोना टाइम में आप सबने वैक्सीनेशन करवाया होगा, बचपन का तो याद नहीं है. तो डॉक्टर पुट सम मेडिसिन इन द सिरिंज एंड इंसर्ट इन योर बॉडी, दैट इज इंस्टेंटेनियस इनपुट, पल्स इनपुट. ठीक है, इसकी जो प्रोफाइल है कुछ इस तरह से बनती है. नेक्स्ट होता है आपका स्टेप इनपुट, एंड यू नो स्टेप इनपुट इज व्हाट, वेयर वी इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट अमाउंट, कांस्टेंट इनपुट, which we either step up or step down. ठीक है, like initially nothing was there, now you have step up the input and this is entering continuously. Okay, so this is step input, just like the voltage, current supply in the fans. You know, regulators are there. If you set the regulator at level 2, the current supply will be there based on level 2, which is continuous and constant. If you change the level on regulator from 2 to 3 or 2 to 1, step up or step down, the current supply will be there constant and based on the respective value. So these are the constant input, step input.
पल्स इनपुट की बात करते हैं तो यू नो दैट पल्स इनपुट में आपका सेटअप क्या होता है, इक्वेशंस क्या होती है. There is a reactor, any flow reactor it is, or it could be a batch reactor, doesn't matter. We introduce the feed with volumetric flow rate V naught, and we are supposed to get the product at the outlet with same flow rate at a steady state. So we introduce the tracer at the mixing point. Let's say N naught amount of tracer is introduced, and we are supposed to get the tracer at the outlet, which is the splitting point, you can say, or the detection point. Detection point would be better. Splitting तो नहीं कर रहा है सच, हम बस sample collect कर रहे हैं. Where at different time interval you collect the samples, and in all those time intervals, in all those samples, you can check the values. The concentration will be having some value. Different time period, different concentration. And this CT is what? You know, here N naught is the initial amount of tracer. Introduced at time t equal to 0. CT you can say is the exit concentration of tracer at time t. Okay, and here if you see, if you know, the input profile is something like this, and output profile will be something like this in general. And this output profile, if you draw between CT versus T for pulse input experiment, that is exit concentration of tracer versus residence time. So this is known as C curve. Okay, this is a general form of the C curve. अब यहाँ पे इक्वेशंस आती हैं, मटेरियल बैलेंस करके आप ट्रेसर वगैरह पे निकाल सकते हो, वो आप सबको पता है. तो जो मेन इक्वेशंस होती हैं वो क्या होती हैं, वो आपको पता होनी चाहिए. वन, यहाँ पे होता है हमारा एग्जिट एज फंक्शन ET, which is V naught into CT divided by N naught. Or you can say molar flow rate of tracer leaving at any time t to the initial mole amount. तो इसकी यूनिट हो जाती है सेकेंड इनवर्स SI सिस्टम में. सेकेंड इक्वेशन जो इसमें आती है, आप जब करते हो इंटीग्रेट फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट फॉर ET इंटू DT, तो उसकी वैल्यू आती है 1. ठीक है, अब उनका क्या मीनिंग है, क्यों आता है, वो सब आपको पता है, हमने क्लासेस में डिस्कस किया है, नहीं तो आपने पढ़ा भी होगा. ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक चीज पता होनी चाहिए, ET इंटू DT क्या रिप्रेजेंट करता है. ET इंटू DT जो टर्म है, इट रिप्रेजेंट्स the fraction of tracer leaving the reactor at time t. तो जब टाइम, sorry, not time t, leaving the reactor between time t and t plus dt. Yes, that's correct. ठीक है, तो इसे जब आप टोटल टाइम इंटरवल में इंटीग्रेट करते हो तो 1 आ जाता है. एंड यू नो मैक्सिमम फ्रैक्शन दैट कैन लीव विल बी 1. टोटल फ्रैक्शन लीव करेगा ना इन द टोटल टाइम इंटरवल, सो टोटल फ्रैक्शन हैज टू बी 1. यहाँ तो 0 है, इसका मतलब वो क्या होता है, that इसके दो मतलब होते हैं. पहला, टाइम एट विच, यहाँ पे हम जिस टाइम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो मीनिंग है उसकी बात करते हैं. इन दिस इक्वेशन दिस 0 मीन्स द टाइम आफ्टर विच tracer started to leave the reactor. Infinite is the time at which all tracer has left the reactor. कि मतलब लास्ट मॉलिक्यूल भी अब आउट हो गया.
सिंपल। तो जरूरी नहीं है यहाँ इनफाइनाइट का मतलब आप इनफाइनाइट लेके चलो और जीरो का मतलब जीरो लेके चलो। अगर ट्रेसर आपने ट्रेसर इंट्रोड्यूस किया एट t इक्वल टू जीरो, सपोज एट 5 p.m. you introduce the tracer, but it is started to leave the reactor after 6:30, तो यहाँ पे जो जीरो होगा उसकी जगह मैं 6:30 लूंगा, मीन्स 90 मिनट्स वो जो गैप है। ओके, और 7 पर सारा ट्रेसर बाहर आ गया तो वहां हो जाएगा 7, मतलब 2 hours 120। ओके, इन मिनट्स, दैट्स हाउ यू विल राइट, दिस इज द मीनिंग। अदरवाइज तो एक और मीनिंग होता है जीरो का, वो ये होता है टाइम एट विच यू इंट्रोड्यूस द ट्रेसर। बट क्योंकि ये एग्जिट एज फंक्शन है, एग्जिट का फ्रैक्शन की बात हो रही है, तो इसलिए हम इसे आउटलेट के बेसिस पे ही लेते हैं। ओके, तो ई टी इंटू डी टी से एक और बेनिफिट है, वो क्या, आप इसकी हेल्प से ये भी बता सकते हो, since et dt represents fraction of tracer leaving the reactor between t and t plus dt, तो अगर आपसे पूछे what will be the amount fraction of tracer leaving the reactor, ठीक है, अगर वो आपसे पूछते हैं फ्रैक्शन, इसे मैं नेक्स्ट स्लाइड पे कर लेता हूँ। ठीक है, अगर आपसे पूछते हैं सपोज what will be the fraction of tracer leaving the reactor between time t1 and t2, तो you guys know वो क्या होगा, it will be like integration from t1 to t2 of et into dt। और इसका जो अगर एरिया आपको देखना है तो आपको पता है एरिया की फॉर्म में आप लिख सकते हो, ईटी वर्सेस सी का एरिया क्या होता है, ईटी वर्सेस सी का एरिया जस्ट लाइक सिमिलर टू सी कर्व, और इसे हम ई कर्व बोलते हैं। ये याद रखना, सी कर्व एंड ई कर्व विल हैव सेम नेचर, सेम प्रोफाइल। ठीक है, सेम प्रोफाइल होती है। वाई, बिकॉज ईटी इज द फंक्शन ऑफ सी, यू नो दैट। ठीक है, इसी में देख लो आप इक्वेशन में वी नॉट कांस्टेंट है, एड नॉट कांस्टेंट है, तो ईटी प्रोपोर्शनल टू सीटी हो गया। तो द वे सीटी विल वेरी, इन द सेम वे ईटी विल आल्सो वेरी। ठीक है, दिस इज योर एग्जिट एज कर्व, और यू कैन से ई कर्व इन सिंपल। तो यहाँ पे अगर टी1 और टी2 के लिए बताना है तो इसे आप देख लो, टी1 और टी2 का एरिया निकाल लो बीच का। ठीक है, ग्राफ दिया है तो एरिया निकाल लो, अदरवाइज इंटीग्रेट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, बाय द वे एक और चीज यहाँ आप सबको क्लियर होनी चाहिए, अगर मैं ई कर्व की बात करता हूँ तो अगर कर्व सपोज कुछ इस तरह से बिटवीन जीरो टू इनफाइनाइट, ठीक है, इस पॉइंट पे वो इनफाइनाइट हो गया, तो एरिया जो है ई कर्व का इन द टोटल टाइम इंटरवल, यू कैन सी integration represents area, so in the in total time interval this area will always be 1, and इसका एरिया क्या सिग्निफाई करता है, एरिया सिग्निफाइज area of E curve, signifies the fraction of tracer leaving the reactor in the given time interval। ओके, तो आई होप इट इज क्लियर। अब यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। बट उससे पहले एक पॉइंट और है जो आपको मैं बताना चाहूंगा अबाउट द ई कर्व। सपोज यहाँ पे अगर हम ये टाइम ले लें कोई रेफरेंस
P dash. ठीक है. So here if you look at this fraction which is red and this fraction which is pink. Okay. So red fraction will represent the fraction of tracer leaving the reactor, or you can say exit fraction of tracer younger than P dash. And pink part will represent the fraction of tracer leaving the reactor, or you can say exit fraction of tracer older to P dash. ठीक है. अब आरटीडी कर्व का जो एनालिसिस हम करते हैं वो कैसे करते हैं, क्या है, तो उसके लिए आपको कुछ की पॉइंट्स हैं जो पता होने चाहिए. वो हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ मूवमेंट्स ऑफ आरटीडी. ओके. तो मूवमेंट्स ऑफ आरटीडी में सबसे पहले आ जाता है आपका फर्स्ट मूवमेंट ऑफ आरटीडी, जीरोथ मूवमेंट ऑफ आरटीडी. यहाँ मैं लिख देता हूँ आपके लिए. nth मूवमेंट ऑफ आरटीडी का फॉर्मूला क्या होता है इन जनरल. nth मूवमेंट ऑफ आरटीडी आप लिख सकते हो एज mu n is equal to integration from 0 to infinite of t to the power n integration with respect to et dt. तो जीरोथ मूवमेंट ऑफ आरटीडी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका म्यू जीरो, दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इनफाइनाइट टी टू दी पावर जीरो इंटू ई टी डी टी. तो यू नो इट इज इक्वल टू गोइंग टू बी वन, मीन्स जीरोथ मूवमेंट रिप्रेजेंट करता है एरिया ऑफ ई कर्व. यहाँ ई कर्व को आरटीडी कर्व बोलते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए. ई कर्व इज नोन एज आरटीडी कर्व इन एक्चुअल. तो अगर आपसे कहेंगे ना किसी रिएक्टर का आरटीडी कर्व बताओ, तो आपको ई कर्व बताना है, सी कर्व बता के छोड़ नहीं देना. नेक्स्ट आता है इसमें आपका फर्स्ट मूवमेंट ऑफ आरटीडी. तो फर्स्ट मूवमेंट ऑफ आरटीडी हो जाता है म्यू वन, जो हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू इनफाइनाइट टी इंटू ई टी डी टी. ओके. और अगर इसे आप नोटिस करो तो ये क्या है, ये आपका बन जाता है टी बार, विच इज नथिंग बट मीन रेजिडेंस टाइम. तो इसका मतलब फर्स्ट मूवमेंट ऑफ आरटीडी रिप्रेजेंट्स करता है मीन रेजिडेंस टाइम. एंड नेक्स्ट आता है आपका वेरिएंस, विच इज सिग्मा स्क्वायर. तो यहाँ पे जो वेरिएंस है वो क्या होता है आपका, वो होता है म्यू टू माइनस म्यू वन का स्क्वायर. जैसे आप बोल सकते हो सेकेंड मूवमेंट ऑफ आरटीडी माइनस फर्स्ट मूवमेंट ऑफ आरटीडी का स्क्वायर. तो सेकेंड मूवमेंट ऑफ आरटीडी यू नो टी स्क्वायर इंटू ई टी डी टी, उसका इंटीग्रेशन बिटवीन जीरो टू इनफाइनाइट माइनस फर्स्ट मूवमेंट यानी कि टी बार का स्क्वायर. गॉट इट. तो दिस इज वेरिएंस. तो वेरिएंस हमें क्या बताता है, वेरिएंस हमें बताता है distribution of values around the mean residence time, distribution of curve, or you can say spreadness of curve. Okay, so this is how you can do the things in for pulse input experiment. तो इसमें नेक्स्ट आता है आपका स्टेप इनपुट एक्सपेरिमेंट. और स्टेप इनपुट मेथड. तो स्टेप इनपुट मेथड में आपको पता है क्या करना है, आपको अपना रिएक्टर सेटअप करना है. Where feed enters continuously at volumetric flow rate V naught, and here we are supposed to get the product at same flow rate V naught. And we introduce the tracer at mixing point continuously. Suppose C naught concentration का tracer हम continuously inject कर रहे हैं.
तो उसकी अगर आप प्रोफाइल देखोगे, इनपुट प्रोफाइल, तो वो आपकी कुछ इस तरह से होगी। इनिशियली कुछ नहीं था, t = 0 तक, और फिर C नॉट कंसंट्रेशन कंटिन्यूसली एंटर कर रही है। एंड हेयर वी आर सपोज टू गेट डिटेक्ट द ट्रेसर। आउटलेट में सपोज जो कंसंट्रेशन है वो C स्टेप है एट डिफरेंट डिफरेंट टाइम। So here you guys can understand one thing. In this case, we have continuous input of tracer. So obviously in the outlet, amount of tracer leaving in the outlet will increase. It will be a, so C step will be a cumulative value, or you can say cumulative concentration of tracer leaving the reactor at time t. और इसके लिए अगर आपको ग्राफ बनाना है इन जनरल, तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। मैक्सिमम वैल्यू आउटलेट पे क्या हो सकती है ट्रेसर की? C नॉट। इसका जो ग्राफ बनता है वो आपका कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, मैं यहाँ एक बार बना देता हूँ आपके लिए दोबारा, ताकि आपको आइडिया लग जाए, अगर विजिबल ना है नहीं हो तो। समथिंग लाइक दिस विल बी द टाइम इनफाइनाइट at which concentration becomes C naught. Okay, this is the general form of the graph. और यहाँ पे जो आपकी इक्वेशन आती है वो कुछ ऐसे आती है, आपकी C स्टेप की इक्वेशन, C नॉट टाइम्स ऑफ 1 माइनस e⁻⁻t/τ। और ये बात हमने नोट डिजाइनिंग ऑफ आइडियल रिएक्टर में की थी, बट फिर भी याद दिला देता हूँ आपको। फॉर all type of reactors, all type of flow reactors, be it MFR, PFR, ideal, non-ideal, doesn't matter, having CVRS, constant volume reaction system, जो उनका स्पेस टाइम होता है, स्पेस टाइम, तो वो इक्वल होता है मीन रेजिडेंस टाइम के। तो यहाँ जो टॉ है, ये मीन रेजिडेंस टाइम भी आप कह सकते हो। ठीक है, और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा आएगा, आपने पीडीसी में भी देखा होगा। समथिंग लाइक दिस। ठीक है, बट इन जनरल हम उसे इस फॉर्म में ड्रॉ करते हैं। और इसे अगर जो ग्राफ है, ये जो इक्वेशन है, इसे आप अगर इनिशियल कंसंट्रेशन C नॉट से डिवाइड कर दो, देखो ये क्या बन जाएगा, C स्टेप अपॉन C नॉट, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस e⁻⁻t/τ, है ना। तो ये जो वैल्यू है इसे हम बोलते हैं FT। तो FT मीन्स cumulative fraction of tracer leaving the reactor at time t। ये सारी चीजें आपको पता है, हम तो बस एक छोटा सा फॉर्मूला रिवीजन सेशन है, इसलिए डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे, बस इक्वेशंस की और उनके सिग्निफिकेंस की बात कर रहे हैं। बाकी अगर आपको इनका आइडिया थोड़ा डिटेल में लेना है, तो आप ज़्यादा डिटेल में लेना है तो आप कोर्स देख सकते हो। अगर बेसिक आइडिया आपको थोड़ा सा ब्रीफ डिटेल्स में लेना है, तो हम क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं 11 नवंबर से अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। आप वहाँ पे देख सकते हो, अटेंड कर सकते हो समझने के लिए। तो ये जो कर्व हो जाता है फिर आपका कुछ इस तरह से बनता है इन जनरल, FT वर्सेस T का जो कर्व है, मैक्सिमम वैल्यू फिर इस केस में हो जाती है आपकी 1। graph will be something like this,
And here you guys can understand one thing. This will be the time infinite. So here it will be difficult to calculate the area along the x-axis. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम एरिया डिफाइन करते हैं, फाइंड आउट करते हैं along the y-axis, इस रीजन का एरिया। और ये जो एरिया होता है ये होता है आपका सी नॉट इंटू टॉ के इक्वल, सॉरी टॉ के इक्वल बस, ये एफ कर्व है ना, दिस इज एंड दिस इज कॉल्ड एफ कर्व। बाकी आप में से किसी को अगर डाउट है सर ईटी और एफटी में क्या डिफरेंस है, तो देखो एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ। ईटी रिप्रेजेंट्स द फ्रैक्शन ऑफ ट्रेसर लीविंग द रिएक्टर एट टाइम टी। ईटी डीटी की बात नहीं हो रही, ईटी की बात हो रही है, मतलब इंस्टेंटेनियस वैल्यू की बात होती है। और एफटी बताता है क्यूमुलेटिव वैल्यू, तो यू कैन से क्यूमुलेटिव फ्रैक्शन और टोटल फ्रैक्शन। क्यूमुलेटिव फ्रैक्शन ऑफ ट्रेसर लीविंग द रिएक्टर एट टाइम टी, और यू कैन से टोटल फ्रैक्शन ऑफ ट्रेसर लीविंग द रिएक्टर एट टाइम टी। और यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए जो एफटी की वैल्यू है फिर वो क्या हो जाती है, वो हो जाती है सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ ईटी डीटी फ्रॉम 0 टू टी। ठीक है, मतलब जो आपको ईटी दिया है उसे इंटीग्रेट करो 0 से टी तक, आपका एफ टी की वैल्यू आ जाएगी। ओके, इसे अगर और अच्छे से समझना है तो आप इसे ऐसे समझ सकते हो। सपोज मैं आपको बोलता हूँ कि यार किसी एक्सपेरिमेंट में सी नॉट की वैल्यू 100 है, और मैंने कुछ डेटा कलेक्ट किया था, सैंपल्स कलेक्ट किए थे डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल पे, उसमें ट्रेसर का कंसंट्रेशन जो था सपोज टी इक्वल टू 3, 1, 3, 5, हर 2 मिनट्स में मैंने सैंपल कलेक्ट किए थे। ठीक है, तो सी टी की वैल्यू टी इक्वल टू 1 पे थी 5, 3 पर थी 10, 5 पे थी 15, और लेट से 12। तो यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूं यार E3 बताओ क्या होगा, तो आप सिंपल बोल दोगे 10/100, अमाउंट लिविंग एट 3, 10, टोटल 100। अगर मैं आपसे पूछूं FT की वैल्यू बताओ, तो आप बोलोगे FT मतलब F3 की वैल्यू। तो T इक्वल टू 3 तक टोटल कितना अमाउंट लीव किया, 5 + 10 विद रिस्पेक्ट टू टोटल। ठीक है, तो ये एक सिंपल वे है इसे अंडरस्टैंड करने का कि क्या मीनिंग होता है। आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर अबाउट द पल्स इनपुट एंड स्टेप इनपुट मेथड्स। ठीक है, अब इसके जो न्यूमेरिकल आते हैं गेट एग्जाम में, वन क्वेश्चन ऑलमोस्ट फिक्स है ऐसा आप मान सकते हो। लास्ट 25 ईयर्स में सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है, या 3 बार आई गेस मैक्सिमम, जब आरटीडी नॉन आइडियल रिएक्टर से कोई क्वेश्चन नहीं आया। अदरवाइज एक क्वेश्चन हर साल आया ही आया है, मिनिमम 1 मार्क का या 2 मार्क का, जनरली 2 मार्क्स का ही आता है मोस्टली। ठीक है, तो आप खुद सोच सकते हो क्या इंपॉर्टेंस है इस टॉपिक नॉन आइडियल रिएक्टर की इन गेट एग्जाम, और बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। आपको इक्वेशन क्लियर होनी चाहिए और उनका मीनिंग क्लियर होना चाहिए, टर्म्स का और ग्राफ्स का, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं। सीआरई आता है नहीं आता कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हम क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में कल। आज हमने आरटीडी की बात कर ली, कल वाली क्लास में हम बात करेंगे आरटीडी फॉर रिएक्टर्स की। ठीक है, कैसे हम अलग अलग रिएक्टर के लिए आरटीडी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही गाइस, कल मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे अहेड। If anyone has any doubt, you can discuss. Okay. Or later on, if you are watching the recording, you can mention the doubts in Telegram channel. Link of my Telegram channel you can find in the description. Or otherwise, you can mention in the comment box as well.